In the previous lecture, I have discussed, started the topic definite integrals. We have discussed the question of the exercise 7.9 and examples of it. Now, today we are starting with the evaluation of the definite integral by the substitution. If we have to substitute some of the values there, then how this definite integral can work there. For this, let us take, I am starting with the definite integral by substitution. Let us take the example 28 here. It is given to us 5x to the power 4 root x to the power 5 plus 1 dx minus 1 to 1. You can observe here that in the square root we have x to the power 5 plus 1. If we differentiate it, it becomes 5x to the power 4, which we have already here. So, substituting here, put x to the power 5 plus 1 as t. So, 5x to the power 4 dt over dx, or you can say 5x to the power 4 dx is equal to dt. Also, in the substitution, we have to change the value of the definite integral according to this substitution. Now, if we take the value of x as minus 1, as these are the limits for the x, तो अगर x की वैल्यू हम -1 लेते हैं, यहाँ पर रखें, then -1 to the power 5 plus 1 is equal to t, that is 0. If x के लिए हम अपर लिमिट 1 लेते हैं, then 1 to the power 5 plus 1 is equal to t, that is 2. तो क्या करेंगे, अब इसमें सब कुछ चेंज कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ t, और जो लिमिट्स पे हैं वह भी हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द t. सो इट बिकम्स from 0 to 2. The limits get changed according to the t, as we have taken x to the power 5 plus 1 as t. This is dt, and this becomes square root of t. The whole question has changed. We have changed the variable from x to t because we have changed the value of the limits from x to t. So, square root of t is t to the power half becomes half plus 1, that is 3 by 2 upon 3 by 2, 0 to 2. It's 2 upon 3, 2 to the power 3 by 2 minus 0. Okay, 2 to the power 3 by 2 can be written as 2 to the power 1 and 3, 5 by 2 upon 3. ऐसे लिख लीजिए या रूट में लिख लीजिए, 4 है तो यह आ जाएगा 4 square root of 2 upon 3. That is the value of this expression. Now, in the same way, if we take another example, that is 29, tan inverse x upon 1 plus x square dx 0 to 1. You can observe here that here the differentiation of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So, substituting here, it becomes 1 upon 1 plus x square dx as dt. Also changing the value of the limit, because these are the limits for the x. We take x is equal to 0. So, tan inverse 0 0. Then tan inverse 0 is equal to t, that is 0 is equal to t. If the value of x is 1, then tan inverse 1 is equal to t, that is pi by 4. So, limit changes from 0 to pi by 4. Tan inverse x is t. 1 upon 1 plus x dx is dt. Simply integration of t to the power 1 becomes t square upon 2. Placing the value of limits here, it's pi square upon 16, that becomes 32 minus 0. So, answer is pi square upon 32. ठीक है, और देखते हैं इसके अंदर. If we take the question number 7 ले लेते हैं एक्सरसाइज में. The question number 7, dx upon
x square plus 2x plus 5 minus 1 to 1. Now we have the quadratic form in the denominator, so again applying the completing square method to make complete square here. There is a coefficient of x square is 1 here, so we not need to divide and multiply with the 1. It causes no effect. Coefficient of x is 2 here. So we have to take the half of coefficient of x, that is 1. So adding and subtracting square of 1 to make a complete square. X square plus 2x plus square of 1 minus square of 1 plus 5. It will be minus 1 to 1 dx, x plus 1 whole square plus 4. Or you can say minus 1 upon 1 dx, x plus 1 whole square plus square of 2. Now, it is the form of 1 upon x square plus a square. Integration of 1 upon x square plus a square is 1 upon a tan inverse x upon a. So it becomes 1 upon 2 tan inverse x plus 1 upon 2. The value is from minus 1 to 1. Half. Tan inverse 1 plus 1 2 upon 2 is 1 minus tan inverse 0. Again tan inverse 1 is pi by 4. It is 0, so answer becomes pi by 8 here. If we observe the question number 8 here, the question number 8, it is integration from 1 to 2, 1 upon x minus 1 upon 2x square e to the power 2x dx. तो उसको कैसे करें? I have written the form here, that is e to the power x fx plus f dash x is e to the power x fx. ये फॉर्म थी हमारे पास. If you take the integration of मैं रिमेंबर करवा देता हूँ आपको, e की पावर x fx plus f dash x. Such kind of form is e to the power x fx. उसी चीज़ को ध्यान में रख के चलेंगे. हालांकि मैं इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम सीइंग हियर दैट 1 अपॉन x हैज़ डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर. तो क्या करें इसमें? लेट अस टेक इट 1 अपॉन 2 1 अपॉन x e टू द पावर 2x. मैं इसे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, पर कंसेप्ट यूज़ करूँगा जरूर. माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर 2x x स्क्वायर dx. क्या करेंगे हम? ये दो एक्सप्रेशन है हमारे पास. वी अप्लाई बाय पार्ट रूल हेयर. यहाँ बाय पार्ट अप्लाई करते हैं. ठीक है. एक्सपोनेंशियल को यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हम? फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन एक्स को लेके चलते हैं हम. सॉरी, फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x को लेके चलेंगे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, एंड दिस वन एज द फर्स्ट फंक्शन. तो क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन. लिमिट्स हैं यहाँ पे, तो लिमिट्स लगाएंगे. माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, एंड फिर होल. जो लिमिट लगेगी वो बाहर लगेगी यहाँ 1 to 2, इंटरनल इंटीग्रेशन पे नहीं लगेगी. 1 अपॉन एक्स e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2. 1 अपॉन एक्स हैज़ डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx. अच्छा, ये एक्सप्रेशन मैंने छोड़ दिया. माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर dx. तो कितना आ गया है? माइनस 1 अपॉन 2. लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2. ओके. e टू द पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर. दोनों एक्सप्रेशन सेम है, गेट कैंसल्ड. यहाँ वैल्यू 1 से 2 सब्सिट्यूट करो. e टू द पावर 4 अपॉन 4. x को 2 रखेंगे, e टू द पावर 4. ये कितना आ गया? 4 माइनस e टू द पावर 2 अपॉन 2. ओके. चाहो तो कॉमन ले सकते हो e टू द पावर 2 अपॉन 2, या ऐसे भी छोड़ा जा सकता है e टू द पावर 2 अपॉन 2 e टू द पावर 2 अपॉन 2 माइनस 1. क्लियर? इन द क्वेश्चन नंबर 10 भी डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ. गिवन है हमारे को इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x
0 to x t sin t. Then we have to find f dash x. Then f dash x is, we have to find the value. We know that the differentiation is also known as the antiderivative of the integration. अगर हम differentiation लेते हैं तो sign of integration gets removed. Now क्या लिखेंगे, since f(x) is equal to 0 to x t sin t dt. So f dash x is given by removing sign of integration, t sin t, sin of integration remove, एक्सप्रेशन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा 0 to x. तो यहाँ पे t की जगह हमें x रखना है. इट बिकम्स x sin x माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो कितना आ गया आंसर? बहुत सिंपल, x sin x आ गया. दैट इज द ऑप्शन बी. क्या लिखेंगे? देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. So that's all about the exercise 7.10. Our next topic is the some properties of definite integral, which is very important. I discuss with you about that topic in the next lecture. Complete your work, previous work, understand your topic clearly, then do it. Till then, thank you.